अभी 5-10 मिनट पहले तो इसी के ठीक नहीं बात है बंद कर देना चाहिए हर काम में टाइटल वगैरह चल रहा है हेलो 4% का जीडीपी लॉस होता है। तो कैसे पता चलता है कि जीडीपी लॉस कैसे हो रहा है, कैसे कैलकुलेशन की जाती है? तो वर्ल्ड बैंक ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, $70। कोई भी डेथ हुई है, अगर किसी भी कंट्री में कोई एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है, तो $70 मल्टीप्लाइड बाय जीडीपी पर कैपिटा ऑफ डेट कंट्री। उस कंट्री का जो भी पर कैपिटा जीडीपी है उसको आप $70 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट दी कॉस्ट ऑफ वन डेथ इन दैट कंट्री। तो ये मैंने 2020 का आपको दिया है, जबकि हम 3 से 4 महीना तो पूरी तरह से घर में बंद थे, हम सड़क पे थे ही नहीं। उसके बावजूद वहां पे सब कोरोना हल्ला मचा रहे थे। 2020 में भी हमने 1,33,000 मौतें सड़क पे हुई हैं, जबकि हम 4 महीना तो सड़क पे थे ही नहीं। तब भी वी हैव लॉस्ट 1,33 पीपल ऑन रोड्स इन 2020। और जो इंजरीज होती हैं, सीवियर इंजरीज, उसके लिए $17 है। तो अब आप देखिए हम कितना पैसा हर साल, और ये केवल 20 का नहीं, कोरोना तो आया 20, 21, 22 में था, अभी वो चला गया, वो आपने वैक्सीन लगवा लिए, सबने प्रोटेक्ट हो गए, बट ये कंटिन्यूअसली एपिडेमिक है जो हमारे साथ चल रहा है, रोजाना चल रहा है, रोज सड़क पे हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। 2022 में तो बल्कि बढ़ गया है, 1,63 पीपल हैव डाइड। तो ये कितना, पहले तो बच्चे जा रहे हैं, हमारे यंग जनरेशन जा रही है, मेल कम्युनिटी जा रही है, और फिर हम पैसों से भी नुकसान पा रहे हैं। तो क्या करें हम अब? सोल्यूशन क्या है? तो हम सब सोल्यूशन है, क्योंकि हम सब पार्ट है प्रॉब्लम का। तो सोल्यूशन कौन देगा? वी आर दी पार्ट ऑफ सोल्यूशन ऑल्सो। मैंने पब्लिक एड भी पढ़ा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है इंडिया का। फर्स्ट लाइन ऑफ प्रीएम्बल क्या कहती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग ही भारत की सड़कों पे समस्या है, और हम भारत के लोग ही सड़कों पे समाधान भी हैं। नाउ इट्स अप टू अस, हमें ये डिसाइड करना है कि हम प्रॉब्लम का ही पार्ट बने रहना चाहते हैं या हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये हमको डिसाइड करना है यहाँ बैठ करके आज, कि हम एटलीस्ट और किसी को ना भी समझा पाए, पर जिस जगह पर, जिस भी कैपेसिटी में हम हैं, हम खुद एज एन पर्सन, एज एन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। एटलीस्ट और कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं सड़क पे, एटलीस्ट इतना भी अगर हम ध्यान कर ले अपनी लाइफ को, तो हम बहुत बड़ा एक नेशन की जो सर्विस है उसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो इससे पहले हमको सोल्यूशन पे आने से पहले हमको समस्या के पार्ट तो हैं, लेकिन हम समस्या में अपने आप को कैसे समाधान कर सकते हैं उसको भी कुछ समझने की जरूरत पड़ेगी।
तो ये मेरी पीएचडी का कुछ टॉपिक्स हैं जो विजन जीरो में उन्होंने यूज किए थे। आई वॉज अपॉर्चुनेट टू गॉट अ फैसिलिटी कि मैं दुनिया के सबसे अच्छी जो रोड सेफ्टी का कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मिलती है, डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी नेदरलैंड्स में है। हम हर साल सिलेक्शन होता है केवल 20 लोगों का पूरी दुनिया से। तो 2016 में इंडिया से मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी। इसको चीज मॉडल कहते हैं। स्विट्जरलैंड की जो चीज होती है उसमें छेद होते हैं स्लाइसेस के अंदर, उसमें छेद होते हैं, और जब आप पूरी लेयर्स में अगर उन स्लाइसेस को ऐड करते हैं तो आप पूरा नीचे तक उसका होल को आप देख सकते हैं। तो जब हम प्रॉब्लम एनालिसिस करें और उसका समाधान हमें क्या चाहिए उस पर बात करें, तो हमें पहले प्रॉब्लम्स के सारे जो लेयर्स हैं उसको लगाना पड़ेगा, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना मल्टी कॉम्प्लेक्स ये प्रॉब्लम है। इट इज नॉट अ वन सिंगल प्रॉब्लम, इट इज अ मल्टी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ऑन रोड्स। तो जब हम उन सबको एक साथ लगाएंगे देन वी शुड अंडरस्टैंड कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। वो लेयर्स को जब हम देख लेंगे देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन। तो ये चीज मॉडल आपको यही समझाता है कि अगर आपको कोई भी सिचुएशन, रोड क्रैश में आप जहां भी हैं, अगर पुलिस में भी हैं, तो आप जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक बार अपने सामने रखिए और फिर सोचिए कि कौन सी वो ओवर लेयर कर रही हैं, जहां पे कौन से सोल्यूशंस को हम यूज कर सकते हैं। देन ओनली यू कैन फाइंड आउट दी एक्चुअली रूट कॉज एंड देन द सोल्यूशन। उसके बाद उसी स्विस चीज मॉडल पे दिस इज सबसे मोस्ट पॉपुलर एक ग्राफ 2002 में ब्रीन ने दिया था, जिसपे विजन जीरो कॉन्सेप्ट को फिर बनाया गया था। दिस इज अ रोड सेफ्टी मैनेजमेंट ग्राफ। ये क्या कहता है, जितनी भी अभी रोड सेफ्टी सेल्स बनी हैं, जो फर्स्ट पिलर ऑफ यूनाइटेड नेशंस है रोड सेफ्टी मैनेजमेंट, 5 पिलर है यूएन डिकेड ऑफ एक्शन के। सबसे पहला पिलर है रोड सेफ्टी मैनेजमेंट। उसको मैनेज करने की जो एजेंसीज हैं, जितनी यहाँ बैठी हैं सब लोग, हमारी क्या जिम्मेदारी है ताकि हम उसको एंड प्रोडक्ट तक कर सकें। तो ये एक पिलर है। इसमें अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ, तो सबसे जो नीचे का पिलर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं पे हमारे देश में गैप है, क्योंकि हमारी जितनी भी मल्टीपल एजेंसीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। उनका खुद का कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, खास तौर पे ग्राउंड पे, वो उनको नहीं पता कि वो अपने डिपार्टमेंट को बाकी लोगों के साथ मिला के कैसे काम कर सकते हैं। अभी सब लोग आइसोलेशन में, बिट्स एंड पीसेस में काम कर रहे हैं, जिसको जैसा समझ में आ रहा है, बट इट हैज टू बी अ कंबाइंड एफर्ट। तो ये, और साथ में फिर पैसा भी होना चाहिए, और जितना जो काम आप कर रहे हैं उसका रिसर्च भी होता रहना चाहिए कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। वो हमारे देश में अभी लोकल रिसर्चेस की बहुत ज्यादा कमी है। हमारे पास है ही नहीं एक इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। तब अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिन्होंने विजन जीरो अचीव किया उन्होंने इस चीज को, ग्राउंड लेवल को स्ट्रॉन्ग किया था, 25 साल पहले से शुरू किया था। फिर उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किए, आइडेंटिफाई की रूट कॉज प्रॉब्लम्स को, दे हैव डेवलप्ड देयर ओन प्लान्स, एंड उसके बाद उनको आउटकम्स मिले। तो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय, और जो हमारे यहाँ पे अभी भी गैप है। Then they come up with this entire safe system approach, जो लेकर जाती है आपको विजन जीरो की तरफ। ये नया कॉन्सेप्ट है जो कि आफ्टर विजन जीरो स्वीडन हैज डिस्कवर्ड। सेफ सिस्टम अप्रोच क्या कहता है कि जो भी सिस्टम है आपका, जो 3 हमने सिस्टम देखे, रोड, व्हीकल एंड रोड यूजर, अभी वो सारे अनसेफ है। आपको सेफ करना है उनको, तो आपको उनको सेफ बनाना पड़ेगा। तो खुद से शिफ्ट करना पड़ेगा लोगों पर। सेफ सिस्टम अप्रोच का सबसे मेन पॉइंट है कि आपको लोगों की सुरक्षा तय करनी है सड़क पर, ना कि व्हीकल्स की और रोड्स की सुरक्षा तय करनी है। लोगों की सुरक्षा के लिए व्हीकल और रोड्स को सुरक्षित करना है। तो अपना जो मेन पॉइंट है वो लोग होने चाहिए, ना कि अदर थिंग्स। तो जब सेफ सिस्टम अप्रोच ये कहता है कि जो भी सिस्टम है आपका वो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, जिसमें डिजाइन, सड़कों की डिजाइन ऐसी हो कि वो पदयात्री से लेकर के और जितने भी रोड यूजर्स हैं उस सड़क पे, उनको सुरक्षा प्रदान करता हो, यूज हो, ऑपरेशन हमारा ट्रांसपोर्ट उसी तरह से व्हीकल्स आए जो व्हीकल अपने आप में इतना सेफ हो कि रोड यूजर अगर गलती कर भी दे तो व्हीकल उसको सेव कर सके। और फिर उसके बाद में हमारी पॉलिसीज एनफोर्समेंट ऐसा हो, और अगर फिर भी दुर्घटना हो जाए तो इमरजेंसी सिस्टम ऐसा हो कि हम उसके जीवन को बचाने के लिए मदद कर सके। तो हर पॉइंट पे ह्यूमन इज इन्वॉल्व, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन इज मोस्ट वल्नरेबल इन दिस एंटायर सिस्टम। क्योंकि एक व्यक्ति, मैं यहाँ कितना भी अच्छा ड्राइवर के रूप में आपसे बात करूं, लेकिन अगर मैं सड़क पे जा रही हूँ और उस दिन अगर मैंने एक मिस्टेक कर दी, तो ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक एनी टाइम।
हमें बचपन से सिखाया जाता है ना, सीढ़ियों पे ध्यान से चलिए। हम एज एन महिलाएं जब किचन में काम करती है, हमें पता होता है ना तवा गर्म है, कढ़ाई गर्म है, फिर भी हम जल जाते हैं ना, फिर भी हम गर्म चीज को हाथ लगा लेते हैं ना। तो इसका मतलब है कि आप कितने भी ट्रेंड हो, कितने भी वेल इन्फॉर्म्ड हो, लेकिन ह्यूमन में मेक मिस्टेक। आदमी सड़क पे गलती कर सकता है, वो सबसे ज्यादा मोस्ट वल्नरेबल पर्सन है इस पूरे एंटायर इकोसिस्टम में। तो हमें अपनी पॉलिसीज, हमें अपना सिस्टम ऐसे डेवलप करना है कि उसकी गलती की सजा मौत में परिवर्तित ना हो। वो गलती कर भी ले लेकिन वो मौत में कन्वर्ट ना हो। ये तो ये हमें ध्यान रखना है। इसीलिए जब हम 23% टारगेट ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट वल्नरेबल है, पेडेस्ट्रियन है, तो हमारे सिस्टम्स में हमें रोड्स और व्हीकल्स ऐसे डिजाइन करने हैं जो पदयात्रियों को सुरक्षा देते हों, पदयात्रियों की वहां पे सुविधा हो। जहां जहां कोलिजन पॉइंट्स हैं, जहां जहां इंटरसेक्शंस हैं, जहां पे लगता है कि ये प्रोबेबल रिस्क प्लेसेस हैं, कहाँ होंगी, जहां पदयात्रियों के और गाड़ियों के टकराने की संभावनाएं होंगी, वहीं पर ही ज्यादा सबसे ज्यादा मौतें होने के चांसेस हैं। तो हमें वहीं पे फोकस करके उन जगहों को पदयात्रियों के हिसाब से सुरक्षित करना है। वो सब कहां पर है? देखिए, रेस इंटरसेक्शन है। तो जब हम इंटरसेक्शन डिजाइन करते हैं, अभी मैं आपको आगे स्टडी में बताऊंगी कि इंटरसेक्शन हमारे कैसे डिजाइन होते हैं, आपने भी सबने महसूस भी किया होगा। तो जो बचा सकते हैं वो ये है कि अगर आप इंटरसेक्शंस और क्रॉसिंग्स और मिड ब्लॉक जो क्रॉसिंग्स हैं, पदयात्रियों के लिए जब आप रोड्स बना रहे हैं तो आप आइलैंड्स बनाइए, क्योंकि एक पदयात्री पूरा 6 लेन का क्रॉस एक बार में नहीं कर सकता। ट्रैफिक इंजीनियरिंग मैम बैठे हैं, जो ट्रैफिक का पार्ट है, जो इंजीनियर रोड डिजाइन करते हैं, आपको बीच में आइलैंड्स बनाने पड़ेंगे ताकि वो स्टॉप कर सके, फिर क्रॉस कर सके, फिर स्टॉप कर सके। खास तौर पर अगर बुजुर्ग हैं और डिसेबल पीपल हैं और बच्चे हैं, वो बहुत जल्दी से दौड़ के क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो हमको, अगर हमने जेब्रा क्रॉसिंग और क्रॉसिंग दी भी हैं, तो उसमें हमको वो चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है जो हम नहीं रखते हैं, कई बार उसको अवॉइड कर देते हैं। दैट इज द प्लेसेस जहां कोलिजन्स होते हैं। तो अभी जितना मैंने पैसों का आपको बताया कि कितना लॉस है, तो वर्ल्ड बैंक की एक और स्टडी हुई थी कि हम ये आधे जो 50% डेथ्स हम कम करना चाहते हैं, तो उससे फाइनेंशियली कितना फायदा होगा। डेथ, लोगों की जान तो बचेगी ही, और केवल अगर हम थोड़ा सा काम कर दें तो इंडिया में हम कम से कम 14% का तो डेथ अर्न कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा पैसा खर्च करके इन चीजों को ठीक कर दें तो हम 14% कमाई कर सकते हैं, रादर देन 3 से 4% लॉस के। तो ये हमारे लिए एक प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस भी है, अगर हम थॉट से, ध्यान से इसको काम करें तो। अभी विजन 0 अचीवेबल है क्या? ऑफ कोर्स है। इवन स्वीडन ने शुरू किया था 1997 में। स्वीडन में अभी तक 0 पे अचीव नहीं कर पाए हैं, वो 20-10% पे ही पहुंचे हैं। लेकिन स्वीडन के बिल्कुल बगल में जो कंट्री है नॉर्वे, उसकी जो शहर है ओस्लो, उसने 2019 में ही 0 डेथ रिकवर कर ली थी। एंड इन 2020 आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई विजिटेड दैट सिटी, आई स्पेंड 3 days देयर टू रोम अराउंड इन दैट सिटी की व्हाट इज दी थिंग्स। तो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी वहां पे इतनी ज्यादा है, जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स की टकराने की संभावनाएं हैं बहुत इतनी नेग्लिजिबल है कि अपने आप ही डेथ्स में ऑफ कोर्स कमी आ गई है। सिर्फ एक ही डेथ हुई थी उस कंट्री में, उस शहर में, वो भी नोविस ड्राइवर था, 18 साल का, वो सीख रहा था कार, और उसने खुद ने ही अपनी कार जाके टकरा दी, जो सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, इसलिए वो किसी और व्हीकल से नहीं टकराया, दीवार से जाके टकराया था। एक ही डेथ, वो भी केवल कार ऑक्यूपेंट की रिकॉर्ड हुई है, अदरवाइज पूरी की पूरी 0 है। तो इट इज अचीवेबल, इट इज नॉट अ हाइपोथेटिकल थिंग। एंड केवल एक शहर ने नहीं किया, 3 शहर ने 2019 में अचीव किया था 0। हेलेंस्की फिनलैंड की कैपिटल है, और जर्मनी की एक कंट्री सिटी ने, और ऑस्लो ने। ऑस्लो में तो मैं खुद विजिट करके आई थी, उसी समय वहीं पर ही थी मैं, स्टॉकहोम में। तो अब हमने क्या किया, जो हमारी स्टडी है, जब मैंने आपसे बताया कि एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा गैप ही यही है, क्योंकि हमें ये सारी चीजें इस तरह से इन्फॉर्म तरीके से कभी पढ़ाई नहीं गई हैं, तो हमें जितना जहां से जो समझ में आता है, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू मिटिगेट द प्रॉब्लम, बट दैट इज नॉट अ सोल्यूशन टू गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट्स एंड वेयर वी वांट टू अचीव। हम विजन 0 पे जाना चाहते हैं तो हम इस तरह से बिट्स एंड पीसेस में नहीं अचीव कर सकते। तो उसके लिए हमने we started one pilot project with one university last year in February। तो MBA की स्टूडेंट्स थी, ऑप्शनल कोर्स है उनके लिए। कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम होता है MBA के पोस्ट ग्रेजुएशन में, एक ऑप्शनल होता है सेमेस्टर, एनीबडी कैन ऑप्शन दैट। तो 20 बच्चों ने हमारे साथ, 20 लड़कियों ने, क्योंकि वो दैट वाज अ वुमेन यूनिवर्सिटी,
तो 20 बच्चियों ने हमारे साथ इस प्रोग्राम में एनरोल किया एंड दे इनवाइटेड अस टू वर्क विद देम इन द कम्युनिटी। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जामिन द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी वेयर दे लिव एंड वर्क, और फिर उसको सॉल्यूशंस दिए जाएं। ये उनके पेपर का ऑब्जेक्टिव था। तो हमने उन्हें प्रॉब्लम दिया कि रोड क्रैशेस आर दी प्रॉब्लम एंड पेडेस्ट्रियन सेफ्टी इज दी प्रॉब्लम, फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, डू समथिंग एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। तो इसमें हमने बाकी तो उनको रोड सेफ्टी क्या होती है, रूल्स वूल सब पढ़ाए, फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी करवाया, बट एक स्टडी उनको दिया जिसमें वो एक्चुअल खुद भी वो पार्ट थी उस प्रॉब्लम का, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी लड़कियों की यूनिवर्सिटी है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाहर बहुत सारे तरह के क्रियोस थे, बहुत सारे लड़कों की आवाजाही ज्यादा थी एंड दे स्पीडिंग ऑल्सो ऑन दैट रोड। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी होती थी, उनको छीना झपट्टी, पीछे से स्लैप करना, ताकि वो क्रैशेस का भी एक पॉइंट वहां पे बन गया है उससे। और क्योंकि हॉस्टल में बाहर से आने वाली बच्चियां भी रहती हैं, तो बाहर दूसरे राज्यों के भी लोग वहां पे बहुत ज्यादा काफी न्यूसेंस मचाते हैं उस रोड के बाहर। वो क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलोनी में ही है, रेजिडेंशियल प्लेस में ही वो यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश्ड है, तो वो एक और बड़ा कारण वहां पे है, क्योंकि पूरे रेजिडेंशियल जो लोग हैं उन्होंने वहां हॉस्टल्स खोल लिए हैं लड़कियों को रखने के लिए। तो वो पूरा एक तरह से ना एक रेजिडेंशियल कम बिजनेस मार्केट प्लेस ज्यादा बन गया, क्योंकि 5000 बच्चियां वहां पे पढ़ती हैं, रोजाना आती जाती हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन हाउ इट हैज हैपेंड देयर। तो इन बच्चियों के साथ हमने एक सेफ्टी ऑडिट किया। सेफ्टी ऑडिट कुछ नहीं है, सेफ्टी ऑडिट है कि आप उस जगह जहां पे भी आप करना चाहते हैं उस जगह पे आप बाहर निकलिए और खुद ही चल के देखिए कि वहां पे एज एन पेडेस्ट्रियन, एज एन पर्सन जो आप वहां रह रहे हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिकॉर्ड दोज ऑब्जर्वेशंस इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। तो हमने वहीं पे लोगों के, और फिर उसके बाद जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनके साथ आप बात करिए उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, जिसका भी जो रोल है वो काम वहां पे आप करवाइए, तो उस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दैट इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेफ्टी ऑडिट। ये कब शुरू हुई थी? ये टोरंटो कनाडा में ही शुरू हुई थी, जब वहां पे काम पे आने जाने वाली लड़कियों के साथ में रास्ते में बहुत सारे एट्रोसिटीज के मामले दर्ज होने शुरू हुए। अकेली महिलाएं जब काम पे जाती थी या पढ़ने जाती थी, तो बहुत सारे जब एट्रोसिटीज हुई, तो जो कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन थे और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के और गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन थे, दे कम अप टुगेदर एंड फाइंड आउट कि एक लड़की जब अपने घर से एक काम की जगह पे जा रही है, ड्यूरिंग ऑल दी जो सड़क पे वो यूज कर रही है एज एन पेडेस्ट्रियन और एज एन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एज एन खुद का व्हीकल, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको आती हैं वहां तक पहुंचने में, और कहाँ कहाँ पे ऐसी पॉइंट्स हैं जहां पर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ में एट्रोसिटीज कर सकता है, और डे टाइम में भी और नाइट टाइम में भी। दिन में क्या है और जब अंधेरा हो जाता है तो वही सेम प्लेस कैसे कन्वर्ट हो जाती है दूसरी तरीके की एक्टिविटीज के लिए। तो दे हैव डन बोथ टाइम दिस ऑडिट, और उन्होंने इंक्लूड किया सभी लोगों को, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को, वहीं के रहने वाले लोगों को और खुद गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने, एंड दे डू द एंटायर जर्नी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दिस फील आउट कि क्या क्या हो सकता है वहां पे चीजों में। तो दे रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन and then they give this a safety audit name. Basically जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, हम हमेशा क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। हम कभी भी कम्युनिटी के लिए अगर आपको कोई भी सुविधा वहां पर देनी है या कोई भी चेंज करना है, क्योंकि वो ही लोग हैं जो रोज वहां फेस करते हैं, और वही लोग हैं कि अगर आप गलत डिजाइन बना देंगे तो वो रॉन्ग साइड से भी जाएंगे, उस जगह को वो न्यूसेंस भी बना सकते हैं। आपकी कितनी भी अच्छी आप इंजीनियरिंग डिजाइन कर दीजिए, लेकिन अगर आपने कम्युनिटी जो वहां रहने वाले लोग हैं उनको आपने एंगेज नहीं किया है, उनकी प्रॉब्लम्स को आपने नहीं सुना है, तो फिर वो उसको यूज नहीं करते हैं, और फिर वो एक प्रॉपर प्रॉब्लम, हमारे लिए नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो प्रॉब्लम, जहां जिस जगह की प्रॉब्लम है उसके लिए वहीं के लोगों से सलाह मशवरा किया जाए, उनको इंगेज किया जाए, ताकि जब आप कोई सोल्यूशन दें तो वो उसको इस्तेमाल करें, राकि एक और नया प्रॉब्लम खड़ा कर दे। तो हमने भी यही किया, हमने वहीं कॉलेज की लड़कियों की ही प्रॉब्लम थी, कॉलेज की बच्चियों को ही इन्वॉल्व किया। उनके यूनिवर्सिटी के 2 किलोमीटर का जो कैंपस था, नियरेस्ट बस स्टॉप था, नियरेस्ट जहां से भी वो आते थे, कितने एक्सेस हैं उस यूनिवर्सिटी में आने के, वो बच्चियों को एक चेकलिस्ट दिया, उनको कहा कि एज एन पेडेस्ट्रियन आप जाइए और ये चेकलिस्ट को रिकॉर्ड करिए। उसमें दोनों चीजें थी, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के भी सारे पॉइंट्स थे और विमेन सेफ्टी के भी थे, कि उनको और बिहेवियर ऑफ दी जो और दूसरे लोग हैं वो कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं इन द डे टाइम एंड इन द नाइट टाइम बोथ, एंड दे रिकॉर्डेड ऑल दोज ऑब्जर्वेशंस। तो मोस्ट ऑफ द 80% लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ वहां पे एक रेगुलर प्रोसेस था,
which they were thinking it is fate of their life. ऐसा मैं भी कह सकती हूँ और जितनी लड़कियां हैं बैठी हैं हम सब कह सकते हैं, क्योंकि हमारा बचपन से, और अगर हम इस चीज को रिपोर्ट कर दें, क्योंकि ये रिपोर्ट नहीं होती है, ये घर में भी रिपोर्ट नहीं होती है, क्योंकि घर में भी रिपोर्ट कर दिया तो सबसे पहले उस महिला का ही, उस बच्ची का ही मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, उसे ही घर से निकलने से मना कर दिया जाएगा। तो वो इसलिए लड़कियां रिपोर्ट भी नहीं करती हैं। तो हमारे पास दर्ज नहीं है ये आंकड़े, बट इट इज हैपनिंग ऑन रोड्स, ये हमको सबको पता है दैट इट इज हैपनिंग ऑन रोड्स। तो ये कुछ फाइंडिंग्स थी कि यूनिवर्सिटी के कितने एक्सेस हैं, नियरेस्ट बस स्टॉप कितनी दूरी पर है, इंटरसेक्शन जो है वो कितनी दूरी पर है, वो सारी चीजें इसमें थी। और फिर कुछ क्वेश्चंस हमने डिटेल में पूछे थे, जिसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हमने पूछा, फुटपाथ है या नहीं है, प्रॉपर लाइट्स है या नहीं है, साइनेजेस है या नहीं है, इंटरसेक्शन पे मिडलैंड्स है या नहीं है। तो एंटायर सिस्टम वाज अनसेफ, नथिंग वाज अवेलेबल। ये यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर वाला गेट है और ये पूरा का पूरा बैरन है। और जनरली यहाँ पे जब लड़कियों के निकलने का टाइम होता है तो यहाँ कार्स और लड़के स्पीडिंग भी करते हैं बहुत तेजी। तो गली आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटी सी है, उसमें भी वो स्पीडिंग करते हुए निकलते हैं, तो कितना न्यूसेंस वहां पे क्रिएट होता है। और ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी के बाहर फर्स्ट ये हाईवे भी है, ये हाईवे भी है जो अजमेर सिटी को जयपुर सिटी से जोड़ता है, B2 बाईपास इसको बोलते हैं। और उस जगह पे आप देखिए ये बड़ा इंटरसेक्शन है, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे, सिर्फ काली सड़कें ही हैं, कुछ भी नहीं है इस हाईवे पे। 4 लेन का हाईवे, ट्रक्स जाते हैं इस रोड से एंड नथिंग इज देयर फॉर पेडेस्ट्रियंस। ये वहां से यूनिवर्सिटी से जब हाईवे पे आते हैं ये वो लेन है, बस एक ट्रैफिक लाइट है जो कभी कभार कोई फॉलो कर लेता है, जनरली रात के समय तो वो भी फॉलो नहीं करते हैं। और छेड़छाड़ रेगुलर बेसिस पे उनके साथ हमेशा ही होती है। इवन रजिस्ट्रार से जब हमने इंटरव्यू किया तो रजिस्ट्रार वाज आल्सो वेल इन्फॉर्म्ड कि हाँ हमारी बच्चियों के साथ प्रॉब्लम होती है, एंड दे वर आल्सो मेड कंप्लेंट्स इन लोकल पुलिस स्टेशन, बट ज्यादा कुछ हुआ नहीं था वहां पर। उसके बाद हमने 2 बस स्टॉप्स की स्टडी किया। बस स्टॉप एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कंट्रीब्यूट करता है एक महिला की सुरक्षा में, इवन पुरुषों के लिए भी है। अगर बस स्टॉप्स के आपने बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड और कवर्ड बना दिया है, पीछे एडवर्टाइजमेंट्स लगा दिए हैं, लाइट्स की व्यवस्था वहां नहीं है, तो वो एक प्लेस है जहां पर छेड़छाड़ और लूटपाट की स्थिति बनती है, खास तौर पे शाम के बाद। तो अगर आपने ये पीछे यहाँ पे, और साथ में हमने जो हमारे डिसेबल लोग हैं जो व्हील चेयर पे आते हैं, अब आप देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मजाक देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये स्लैब डाला है, कहाँ उतरेगा वो, ये चल क्यों नहीं रहा। तो जो बस स्टॉप के स्लैब्स बनाए उन्होंने, और वो कहाँ जाके उतर रहे हैं, एंड कहाँ हो रहा है, कोई व्हील चेयर वाला व्यक्ति इस बस स्टॉप पे कैसे चढ़ेगा। तो ये है इंजीनियरिंग के डिफेक्ट्स जो हमने किए हुए हैं, ऐसे हर जगह किए हुए हैं सड़कों पर। तो ये हमें सोचने की जरूरत है कि, और फिर पीछे की तरफ उसी सेम बस स्टॉप के पीछे यहाँ पे पूरी झाड़ियां हैं, यहाँ लाइट्स भी नहीं है, तो रात के समय यहाँ पीछे अगर कोई लूटपाट करता है महिला या पुरुष से, तो सामने व्हीकल्स को पता भी नहीं चलेगा कि पीछे क्या स्थिति बन रही है। तो ये एक सेफ्टी की जगह अनसेफ प्लेस में कन्वर्ट हो जाएगा शाम के समय। महिलाएं तो यहाँ बैठ भी नहीं सकती अगर वो अकेली हैं तो। सिमिलरली ये सेम बस स्टॉप, एक अच्छा जो बस स्टॉप था वही कुछ किलोमीटर्स आगे, उसी रोड पे कुछ किलोमीटर्स आगे एक और बस स्टॉप बना हुआ है जो कि अच्छा वेल प्लेस था, और साथ में पीछे की तरफ देखिए पूरा खुला हुआ है। तो अगर रात के समय भी यहाँ पर किसी के साथ कोई छेड़छाड़ पहले तो कोई सोचेगा ही नहीं करने की, और कर भी लेगा तो आने वाले जाने वाहनों को दिखाई भी देगा, तो अचानक से किसी के साथ कोई घटना नहीं घटेगी। तो हमने ये क्या किया, रिकॉर्ड किया इन ऑब्जर्वेशंस को, और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो राजस्थान में परिवहन विभाग ही सड़क सुरक्षा का विभाग भी है, और वहां पे एक प्रॉपर रोड सेफ्टी सेल बना हुआ है जिसमें सभी विभागों के लोग डेपुटेशन पे आकर के बैठे हुए हैं। तो वहां पे हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और जो रोड सेफ्टी सेल के ऑफिसर्स थे, इंक्लूडिंग ऑल डिपार्टमेंट्स, इंजीनियरिंग, पुलिस एंड एजुकेशन, सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे वहां पे, उनके साथ उन्हीं बच्चियों की जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 20 स्टूडेंट्स ने, उनका एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराया लास्ट ईयर मई में, और उन्होंने रिपोर्ट किया वहां पे, ऑब्जर्वेशंस अपने रिकॉर्ड करके उनको सबमिट किए, जो भी डिमांड्स थी कि महिलाओं के लिए वो एरिया थोड़ा सुरक्षित हो जाए, कैमरास लग जाए, लाइट्स लग जाए, पुलिस की थोड़ी सी पेट्रोलिंग की व्यवस्था में ज्यादा बढ़ जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जरूरत है पेडेस्ट्रियन सेफ्टी की, स्पीड हम्स चाहिए या साइनेजेस चाहिए, वो वहां पे लग जाए। इस तरह से रिकॉर्ड करके दे सबमिटेड ऑल दोज थिंग्स टू द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एंड देन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वाज वेरी a nice person, and he took that
प्रॉब्लम इमीडिएटली, बिकॉज लड़कियों, पहले तो लड़कियां फर्स्ट टाइम वो एक इनिशिएटिव था कि बच्चियां खुद जाके बता रही थी, तो वो उन्होंने बहुत सीरियसली उस चीज को लिया एंड दे एक्चुअली सेंड वन देयर ओन टीम टू द यूनिवर्सिटी टू डू अगेन द ऑडिट। उन्होंने अपनी सारी टीम को भेजा, पुलिस ऑफिसर और इंजीनियर ऑफिसर और कंसल्टेंट्स को, उनसे पूरा ऑडिट करवाया, उस पूरा जैसे हमने किया था वैसे ही यूनिवर्सिटी की जो प्रॉब्लम्स थी उनको अंडरस्टैंड किया, डिस्कशन किए सारे लोगों से, एंड दे आल्सो देयर डेवलप देयर ओन रिपोर्ट एंड सेंड टू द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो जो प्रॉब्लम था। उसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस सबको जो इमीडिएटली मेजर्स लिए जा सकते थे वो तो तुरंत ले लिए गए, पुलिस पेट्रोलिंग वहां पे बढ़ा दी गई, लाइट्स वहां पे लगा दी गई, जिससे कि जो रेगुलर छेड़छाड़ थी वो खत्म हो गई। और साथ में जो इंस्टॉलेशन का काम है, रोड इंस्टॉलेशन का, वो क्योंकि इलेक्शन थे 4 महीने के तो ड्रॉप थे, लेकिन अभी वो वापस से शुरू हो गया, टेंडरिंग हो चुका है उसका, और मे बी अगले 3-4-6 महीने में हमको वहां पे उस इंटरसेक्शन पे थोड़े से जो पेडिस्ट्रियन फैसिलिटी के चीजें हैं वो वहां पे दिखाई देने लग जाएंगी। बट साथ में यूनिवर्सिटी ने के बच्चियों में और यूनिवर्सिटी में भी एक साथ में उनको अवेयरनेस हुआ। अगले वाले सेशन में हमको 60 बच्चों ने एनरोल किया अपने आप ही, 20 से 60 हुआ, और उसके 6 महीने बाद अभी लास्ट इसी फरवरी में यूनिवर्सिटी ने अपना खुद का एक सेल एस्टेब्लिश कर लिया है एंड इट इज ओपन फॉर ऑल 5000 स्टूडेंट्स एंड 500 प्लस स्टाफ टू लर्न द रोड सेफ्टी एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन। और वो अपने जो उन्होंने गांव भी अडॉप्ट कर रखे हैं, उन गांवों में जाकर के भी दे वांट टू इनकलकेट दीज प्रैक्टिसेस। तो ये एक इम्पैक्ट है आपका कैसे इंक्रीज होता है। ये चल रही है तो दे हैव एस्टैब्लिश्ड दिस सेल, और उसमें उन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स भी डिस्प्ले कर दिए हैं ताकि सारी बच्चियों को जब भी कोई प्रॉब्लम हो दे कैन कॉल एंड दे कैन गेट दी बेनिफिट्स फ्रॉम दी पुलिस डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सोशल इम्पैक्ट आया, कि तो जेंडर एम्पावरमेंट हुआ, जो महिलाएं अभी पॉलिसी में जाएंगी उनको रोड सेफ्टी के बारे में पता चला, और अब वो खुद आगे करियर ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट में इसको डिफरेंट स्ट्रीम्स में बच्चों को रोड सेफ्टी एग्जैक्टली क्या है, ताकि जब पॉलिसी मेकर्स में वो जाएं तो दे विल बी अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो दैट इज हाउ वी कैन अचीव द विजन जीरो। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Thank you, ma'am. May I now request Padma Shri Dr. Subrato Das sir to please present a memento to ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Our next speaker is Munish Swami Basu sir. He is the social impact. Sir, please. May I now request Munish Swami Basu sir to please come on the stage, sir. Munish Swami Basu sir is a social impact professional. He is director of We Do, a road safety NGO, and a national road safety trainer and advisor. He is member in Global Alliance NGOs for Road Safety, Indian Alliance NGOs for Road Safety, International Road Victims Partnership, and District Road Safety Committee, Government of Andhra Pradesh. If we'll talk about his educational qualification, he is MA in Social Work in Community Development, Postgraduate Diploma in Labor Laws with Administrative Law, Diploma in Cooperative Laws, and Certificate in Alliance Risk Area Course, Geneva Safe Riding Initiative by CRRI, New Delhi. If we'll talk about his professional career, he is subject specialist in project cycle management of truckers intervention and rural development projects, participatory rural appraisal, local resource audit, and self-help and participatory approaches, and also in project appraisal. His experience in road safety advocacy training and workshop with different stakeholders across the nation. Well experienced in road safety education leads to behavioral change with different road users and traffic violators. He is experienced in implementing road safety trainings and initiatives in southern states of India since 2006 for different target groups like educational institution, TOT for teachers, two-wheeler riders,
commercial vehicle drivers, corporate employees, and truck drivers. He is very much active in road safety issues, and I am just connected with his WhatsApp group of road safety NGO, whatever we do. And he's constantly, every time you, those who are from South Indian states, they must be knowing that he is very much active in the field of road safety, and regularly he's just organizing training for police officers as well as civilians also. So now, may I now request Vasu sir to please take over the session, sir. Yes, thank you. Good morning to everyone. Thanks to BPR&D, already she has mentioned the global plan, decade of action 1, decade of 2. Like, there are n number of initiatives taken across the globe, as well as Indian government taken a lot of initiatives to prevent the road crashes. Actually, this platform, we are all involved, particularly most of the officers involved in the enforcement sector, not only planning, designing of the programs. Already decade 1, yes, decade of action road safety to the 2021. You see, 11 and 10 already we have completed. We didn't find any sort of result and impact. The road crashes are keep increasing across the globe. Then decade of 2021 and 30, global plan designed to curb the road crashes at least 50%. But when we started the decade of action 2, within 2 years, 6% of road crashes has increased across the globe. 6% of crashes. But we have set the goal to reduce 50% crashes. Apart from this, India is the number 1 across the globe. We are in the place 1. Around 5 lakh road crashes every year, and 1,67,000 hard. In the 2022, we lost human lives. 35th National Road Safety Month. Actually, last 3 decades, we have maintained Road Safety Week. Then 35th or last 5 years, we are focusing Road Safety Month. The purpose, but what we are going to achieve, till we are lacking behind. The sense there are a lot of infrastructure has come up on road use. Machines have developed, different type of vehicles, speeding and everything. Level of education is increased. But whereas the road safety behavior is the matter. Who is going to start? For example, in the year last polio case has been registered in India 2011. Till today there is no polio case has been registered so far. But again, when we see last almost 12-13 years, we are drastically increased socio-economic level of socio-economic standards, education, everything. But the road using behavior has drastically come down. We lost around 1 crore people became physically challenged. 1 crore people in the last 12 years of period. So how the behavior of road users will change? We'll try to curb these road crashes. The global plan describes what is needed to achieve the target and calls government and partners to implement the integrated safe system approach. They are involved, all kind of stakeholders, all stakeholders must involve to curb this
road crashes includes the road users, Right. What recommended action is taken in the global plan? The multimodal transport and land use of planning, multimodal transport. So use of public transport, use of EIBs, this brings the reduce of the vehicle on the road. Then safe road infrastructure. Safe road infrastructure, vehicle safety, safe road use, and post-crash response. Post-crash response also plays a very important role after the crash to reduce the fatality. The requirement for implementation. Financing, legal framework, speed management, capacity development, ensuring gender perspective in transport planning, adopting technologies to the safe system, focus low and middle. This is very important. Most of the crashes happening recorded that the low and middle income countries. So here there are stakeholders, involvement of the stakeholders to prevent the road crashes, particularly road user behavior. One is pedestrian. Unless whatever the infrastructure and that the technologies we are bringing, unless we are not changing the road user behavior, and we are unable to curb the road crashes. So how we can able to change the road user behavior? For example, pedestrian. Most of the last year 2023 we lost 22,000 pedestrians killed on Indian roads. 22,000 pedestrians killed on roads. The basic why the pedestrians are killing on the roads? How are we educating in the schools how to cross the road? Are we educating the public how to cross the road? Till today, if we even step into any educational institution, teachers, parents, they are taught to the children, walk on left. Till today, wherever we go, this is the message. We should walk on left side. Now, after the infrastructure development, we must see the change. Who has educated this particular information? Where there is an elevated footpath, we must educate to the children. Where there is an elevated footpath, you must walk on left hand side. Where there is no footpath, we must walk on right hand side of the road. Then only we can able to observe the oncoming traffic. So this is what happening. So this kind of small changes, small education inputs can change a lot of, save the lives. The second most important thing, then use of footpath. When we talk about using a footpath, is all the footpath is in the usable places? Once the footpath laid, lot of encroachment. There is no place, the pedestrians cannot walk on the footpath. This is the kind of scenario. So what would be the role of stakeholder on this particular issue? What municipal corporations, what the government is doing, what is the particular department is doing the enforcement on this particular issue. So we should talk about on this particular. Then again, cyclist, safe cycling system we should talk about, because now gear cycle has come up equivalent to the motorbikes. Simply school students are taking the bikes, electric bikes, they are coming onto the schools. So how we can able to curb this particular issue? Then use of indicators, these are all the common mistakes of road users. How we are going to educate all this? So after use of indicators, using the right indicator, taking on the left side, using left indicator, going on right hand side, all the time using the hazardous lamps. So these are all the common mistakes which leads to the crash. Then no side mirrors. This comes again the enforcement under the Motor Vehicle Act. There are we can able to issue the challan and all, but we can see there are millions of two-wheelers has no side mirrors. Even if it is there, they are not using it. So where they will going to be get the kind of information, obtain the knowledge of use of side mirror. Then lane driving. Then because once two-wheeler, after that immediately they are upgrading to buy the cars. So they are missing to observe the side mirrors. So again lane driving. Then now earlier there is no lane driving. Even single road or onward traffic, both they know where traffics are on the way.
But now the divider has come up, 2 lane, 4 lane, 6 lane, expressways come up, but most of us doesn't know which lane we have to drive, which lane we have to drive. Again, overtaking. Lot of mistakes on overtaking. Okay? Overtaking on the left hand side, overtaking on the right hand side. Then the speed to gear, change of gear when they are overtaking. So these mistakes are leads to the crash. Then approaching at junctions and signal jumping. This is another most important common mistakes of each and every road user. Approaching at junctions, what they have to do. When they are approaching the junction, the lane change, when they have to stop, where to stop. These are all the things they must learn when they are approaching the junctions. Again, signal jumping, speeding. Speeding is again the cause. Parallel driving on national highways, distraction driving, use of mobile phone, parking wrong or no parking areas they are parking, right? Applying the brake, clutch and accelerator, applying the brake. When they are speeding up, they doesn't know when they have to apply the brake and clutch, whether the first they have to brake or clutch. When you are in the high gear, by the time you have to apply only brake, not on the clutch. So these are all the things matters to see the changes of the braking distance, so that there is a chance of rear end collision. The braking distance according to the speed, then use of headlights, high beam, low beam, again mist lamp using and also extra lights, the LED lamps leads to the crashes right now. Now wearing of helmet, seat belt, the head gears and safety devices plays an important role to prevent the road crashes. This is again the mistake. Then merging and exit lane approaching road. Now the expressways, when we to take lane, there are a lot of signboards, new signboards has come up, but the people doesn't know what does it mean. What does it mean? When you are traveling on the expressway, the exit lane sign up is there, but the driver doesn't know the meaning of the exit lane sign up. When we are approaching from the service lane to expressway, there is a signboard. The people, driver doesn't know that. All the existing drivers must be educated on these issues. Now Marcus released new signboards and booklets. But this has to be distributed and educated to all the drivers. Particularly, I am requesting when I discuss with my DGP, with our DGP AP, to educate all the drivers of police department to upgrade their knowledge of the road signs and signals. So this is again the role of government. Pedestrians' role is to understand and obtain the knowledge to overcome the mistakes. Then this thing, you see, the role of government. What is the role of government? When we talk about the road safety, we are simply stepping in all the road safety month or road safety week, stepping into the educational institution. Is any particular government department has come up to mobilize their employees to train about the road safety? To any department has come up to mobilize their drivers to talk about the road safety. So we should think this particular issue to educate all kind of road users must be educated on the road related issues. Then role of private sector. This is very important thing. Role of private sector plays a very important role. Recently in the year 22, I have stepped in 140 corporates in Chennai, Tamil Nadu. 140 corporates. We have trained 12,000 corporate employees. Particularly these corporate employees, each and every corporate has the safety officers. They have appointed the safety officers. They are trained each and every employee on the fire safety, machine safety, industrial safety, all safety measures. But no corporate has given time for the road safety. Within the four wall, they are teaching, they are educated them where to sit, where to walk, where to run, where to park their vehicle. But when they come out from the company, they are completely missed on the road safety. For example, Amara Raja group of companies in Chittoor district, they have 18,000 employees. But last 6 months, they lost 21 employees in the road crash. This is very pathetic scenario. Very pathetic scenario. We have taken up different initiatives how to deal with the issue in the Amara Raja group of companies. So that not only within the industrial safety, so we should, our role
our role as a department wise or the individual wise, we should make the people to understand the issue. We should make the people to understand the issue, how to derive as well as curb the road crashes. Once we does not understand about the issue, they will simply treat with us a kind of awareness, not a kind of education. Education leads to change the behavior. Our role to see the behavioral change of each and every road user. Then again, role of academia. This role of academic institution, civil society organizations and youth. Actually, this again, we brought up very important issue. Academic institution, we have designed the content to include the education department 7th class book in the AP. They have incorporated the lesson traffic education. This has become a change again. Then again, civil society organization, we are focusing more on the civil society organization to perform the role on road safety and youth. Particularly in all the educational institutions, we can see Student Federation of India. Student Federation of India, when the student committed suicide, is any other issues has come up. But why the Student Federation of India not to discuss about the road safety? Why they are not focusing? What is our role? How the Student Federation of India to make the understanding issue to save the lives on the roads? And again, role of funders. You see, these are all the common mistakes again. So we should educate. Taking left hand side, truck is on the cement road. Now the infrastructure has come up. Government is spending a lot of money. What is the role of corporations? They're laying the nails on the road. Zebra crossing again. There is an enforcement authorities, traffic police available. These people habituated after crossing the zebra line. What is how we can able to see the change, the kind of behavior? Are we going to standardize our education enforcement challenge? How we can see this is again all this the kind of that violators, they are capturing hundreds of times on the camera. CC cameras, we are setting up CC cameras, everything. Then they are doing on the same. See, this is another kind of behavior. You see, children, class 5, 6, they are riding the bikes. Parents' role or government's role. You see this? Again this. In the mines, near mines, the lot of gravels, loose gravel. So, these are all the changes. There are, you see, the BMCs under the NHA department, then roads and building. What is their role? How we can able to see this? When they apply even two-wheelers, when they are overtaking, there is a gravel. So when they apply brake, automatically the vehicle will skid. There is a lot of chances. We can't get the friction. You see again. So this is again in 3-lane, here 2-lane merging into 2. 5-lane merging into 2-lane. There are encroachment. Then this is one of the major black spot in Vijayawada. This is very simple, it's a gap in median. Already speed breaker is there, barricades they have kept. Actually, we have suggested this is approach road. This is one of the major black spot again. So here, VMC and R&B, NHA, they will play very simple. You see, they can remove simply, if they remove these greeneries, automatically we can have the, visibility when the person taking U-turn and all. But unnecessarily, that use of speed breaker, barricades and all, this leads, they are again waiting for the funding. We have discussed many times, but even simple black spots unable to rectify because the lack of coordination between the departments. Once we have a well settled coordination between the departments, then only we can able to see the changes. We can save the lives. This is happening again and again in all the places. I can show you a small video that shows that.
System is set. Charge. System. That's the bridge.
Yeah. Sorry for the inconvenience. I'll show some clippings. What is the stakeholders' role, place? Please observe this clipping.
road users behavior as well as the role of other stakeholders. That's it. Right? So here we can see once after the crash, we will point out two-wheelers mistake. Two-wheelers. Then again, we will file the FIR, we will close the case. This is one of the major black spot. Major black spot. See, what is the other stakeholders' role here apart from the two-wheelers mistake? Apart from the two-wheelers mistake, you can find there is a lot of encroachment. First, you have to see where there is a gap in median. We must have the compulsory keep left signage. Compulsory keep left signboard must be placed here. There is no road markings. There is no zebra crossing. There is no stop lane near the gap in median. Where if we find, if for example, if you have, even if the bus driver commits mistake, how the bus driver can know there is a gap in median? There is no signages available. There is no zebra crossing available. If he observes the zebra crossing or either signages or stop lane, automatically the commercial vehicle drivers, public transport, they have an attitude to slow down. All the drivers, over the drivers, if there is a gap in median or if they find the signboard, automatically they will slow down. Okay, so here there is no road marking at all. What about other departments' role here? Encroachments are available here, again encroachments. So these are all the things. Apart from road user behavior, if it is there, automatically the bus driver may slow down. He can able to prevent the crash this particular area. See, this is another example. Two-wheeler rider, many common mistake, using mobile phone, not wearing headgear, going in the opposite direction, hit a two-wheeler, fell down, died on the spot. He died on the spot. This is another example. One is road user behavior. Apart from this, what helps us to prevent the road crashes? What helps us to prevent the road crashes? For example, you see, this is two lane, 4 lane, one lane completely occupied. Only one lane completely occupied with the debris. So here, whatever the vehicle coming this place, they are try to squeezing. They are try to squeezing as well as try to overtake. Already there is a 2-lane marking. In previous video, there is no road marking. Even the 2 solid lane, that is not permitted to overtake, equivalent to the divider. The 2 riders are forced to overtake here. And again, the same opposite direction also, the same scenario. So, how we can able to, not only road user behavior will not help us. Ultimately, we should work simultaneously in coordination with the other departments. This is what we are having and discussing each and every month. There is a road safety committee, district road safety committees, state road safety committees. But it is not happening. It is not. We are not having the fruitful discussions in particular department. Each and every discussion matters with the budget and manpower. Ultimately, some civil society organizations come up to bring up these kind of issues, but even we are unable to materialize. This is another situation. So even whatever the infrastructure comes, definitely without changing. This is another example. Already one. This particular. So already 4 two-wheeler riders crossed. This 1 two-wheeler rider unable to see the cow, hit at the cow, fell down, died on the spot. So we can derive many causes again here. Overspeeding, drunken driving, use of mobile, distraction driving, not wearing headgear. So like that we can list out n number of things.
then again, what is the ultimate role of the stakeholders in this point of view? This is the major issue across the nation. Across the nation, cows on the road, cows on the road. Again, these headlights. So these are all the things. So what is the role of corporation? What is the role of corporation to prevent the animals on the road? Animals on the road. There is an act. But still we are unable to curb these kind of issues. So whatever the infrastructure coming, express highways, barricades, fencing, walls, dividers, everything, if you are unable to change this local scenario, definitely we will also become the road crash victim. We keep observing, if you are doing something, we are unable to fulfill our roles and responsibilities, definitely it will come and knock our doorsteps tomorrow. So as a civil society organization, as an NGO, you see, also, I can show you another example. This is a common scenario again. Already there is a traffic cop, free left, okay. Even the people are trying to coming opposite direction. This is happening in front of the cop. That means that barely they are coming on the one way, coming on the free lane. That means they are habituated, no proper enforcement, they are not educated. So this is what happening, the people are practicing, simply coming on the one way in front of the traffic cop. So ultimately, this driver will lose his job, because this is the blind zone, blind spot for the bus driver, he is unable to see. So other factors, so whatever, we can talk about infrastructure, funds, finance, another, the traffic technologies and all. Our role as a We Do Road Safety NGO has taken up the initiatives in Andhra Pradesh. Particularly, we are working pan-India, focusing more on the southern states to curb these road crashes by educating as well as the capacity of the commercial vehicle drivers in southern states. So are some of the initiatives. Our vision is safe roads for all road users. We focus behavior through the behavior change communication. We do road safety alliance of the Indian Alliance as well as the Road Safety Foundation Mumbai, Post Care Coalition. Then again, member District Road Safety Committee, Global Alliance NGOs for Road Safety, International. Why we are the members? You can ask us. But simply learning by sharing. We are becoming a member in the different national and international forums to try to learn the innovations and try to implement in the local level. That is what we are trying to do something. One of the initiative is road safety education in schools and colleges, particularly class 8 to class 10. We are educating 10,000 students every year, 10,000 students in every year. At end of the session, we'll bring 15 to 20 students as those who are interested, those who are participated very actively, they will become as safety champions at end of the session, so that throughout the year we can give inputs, materials to educate their parents and siblings. They will become as a peer model. The second thing is road safety, TOT for school teachers. All the time we cannot step into the schools and colleges, so that we are social studies teacher and physical education teacher. We are providing training and also giving the materials to educate other students whenever they find time. This is again traffic education, particularly police department related to the drunken drive and enforcement and all. We are conducting in Tamil Nadu. Then engineering students, upcoming engineers. This is another one of the most challenging tasks in front of us. Engineering college students. Not only simply school students is the common road safety issues. Here engineering college students, higher education degree and PG degree students are riding their bike. Yes, yeah. Without safety devices. So all the safety devices, machines and all identified, innovated by the engineers. But upcoming engineers, why they are not respecting the safety devices? So we should make them to understand this thing. Then again, capacity building for the commercial vehicle drivers.
This is during, we will do the assessment also. For example, you see, during my assessment, one driver tried to take right turn, he stopped the vehicle here. But he himself creating the blind zone. But most of the drivers does not know where to position their vehicle when they are taking left or right. So you see again, taking reverse, smart. The perfect position gives the visibility of minimum of 0.25 to 0.5 kilometer visibility, so that he can able to see. The road safety matters see and see you, not only seeing us. We should make the other drivers also should see us. This is the matters. Corporate employees training, counseling for the minor drivers in Vijayawada. We are taking, this is one of the key issue. RTC drivers doesn't know the, new lane marking, new road signs and all. So that we are taking as a kind of field visit, RTC public transport drivers, to educate the road markings on the field. See, this is drunken drivers counseling, advocacy meetings. Also, we are appreciating good drivers to educate RTC drivers. Apart from this is one of the major thing as a civil society organization and the other departments should concentrate on the World Day remembrance of road traffic victims. This should give the awareness other people to bring the number of human lives lost in the local level, so that they can, their relatives, siblings, friends, they can understand the issue, so they can contribute themselves to prevent the road crashes. This is, see, there are 15,000 employees. I have said, no, that Amar Raja group of companies, we can't educate all 15,000 employees in a day or two. So that we have designed and developed the mass media campaign to educate these employees. And the role play, truck drivers. Apart from this, last year we have with the support of Hyundai Motor Foundation, we have focused 18,000 drivers, 18,000 commercial drivers as tested. Eye testing, blood, BP, sugar, because BP, sugar matters leads to the, apart from road crash, which leads to the road rage to hindrance the traffic. Road rage to hindrance the traffic. This is happening. RTC drivers, again black spot assessment, district road safety committee. Then this is traffic warden team. We have 250 traffic wardens to support the police department in AP. Then this is the education, our training module. Yes, no, they are requested, permitted. We have permitted to incorporate the traffic education to the school children. So this is our case study, success role models. Thank you so much. थैंक यू वासु सर. इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी प्लीज आस्क. अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं. सर प्लीज. सर. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Morning, sir. My question is just, you talk about the, ma'am, as I told, the early session, in the first session, that the behavioral pattern of the society or the society of the people, that we came to know all the slides of the, your PPTs, how this, like emotional quotient or dissonant cognizance is basically to working the behaviors of the, especially the peoples, that the traffic rules that have to be examined properly, as we are, the educated peoples in the society, and everybody is educated. So the reason behind it. Yeah, everybody is educated. Here road safety matters to segregate the target group. That particular target, for example, pedestrian means you should focus only on the pedestrians, youngsters. Then again, college students means what are their common mistake? We should make them to understand their particular issue. If it is a family leader, we can't go and deliver, use helmet, use seat belt, not to use mobile phone, not over speeding. We can't discuss with the school children.
So what is the school children? When we talk about school children, talk about school safe cycling, pedestrian safety, how to travel in public transport, how to travel in school buses. So how to obey their school bus driver and attendants. What is their school bus drivers and role when they, after getting off from the bus, to cross the other side of the road? What is the role of bus driver and attendants? We should focus more on that, and we should give the demo. Then when we talk about two-wheeler riders, focus only on the most challenging using of mobile phone, distraction driving, not to use the headgear. This is the matters. So how headgear will prevent the road crashes? For example, you can give simple example to them. We are each and everyone, we are using the mobile phone, right? But whatever the money we spend, 10,000, 20,000, 1 lakh rupee, after some time that will become the zero value material. It will not be treat as even 1 rupee. But for zero value material, we are spending minimum of 500 rupees by using the protecting the screen guard and bodyguard. But we are watching on the road, we are witnessing the road in the road crashes, reading newspapers, the n number of people dying without helmet, two-wheeler riders. That shows that why they are not buying the good ISI helmet. That shows that they are not respecting their life. They are not respecting the life. So how to make the student to understand they respect their own life? So we should make them to understand the critical issue. We should make them to critical thinking to prevent the road crashes. Right? Also, as a department, we all know very well. Even if we lose 1/3 of little finger, they can't apply for even constable post. Right? Even for student, n number of students, they have a dream to join in army, navy, police, defense. But why they are not respecting their body? So we should make them to understand. Also make them to critical thinking. Across the border, army, navy, police, defense, they are sacrificing their life, protecting us. But every day, around 800 people, 462 as record, off record, another 500 people dying. Why we are not discussing it? If 5 people, 1 or 2 entered us, you entered into the country, if they killed 2 or 5 people from Kashmir to Kanyakumari, they are coming out with the rallies, with the candle lights. But every day we are losing more than 500 lives, we are not ready to discuss. So what is the role of student in road safety? What is the role of teachers in road safety? So how we can discuss, how we can arrive to find the solution for this. So we can set the target, discuss according to the scenario. Right. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. So may I now request? Yes, please, sir. Last question, sir. Please. No, here there is no north south for the behavior. Each and everyone, only one particular behavior we have observed across the nation. When I am traveling, I never try to overtake. I never try. I should understand whoever the people in front of me, whoever the people, two-wheeler or four-wheeler, they also came on the road, the purpose what I came on the road. My family also urgent to rush to the hospital. My children also go to schools and colleges. My family members also going to the office, market, everything. The same purpose each and every road users coming on the road. I am the not only person to rush on the road. So if we make them to understand that particular issue, we should make them to think about this, related to this kind of issues, we can see the changes. Here not like that. So each and everyone wanted to rush on their own. That is what traffic hindrance and traffic jam is coming up. So the only penalty and punishment will not help us. There is a penalty and punishment. Underage drivers, minor drivers, those who are not having the valid driving license, 3 months imprisonment. Why we are not putting them on the imprisonment? Why we are not producing to the judicial this thing? Why? Because we are all in the developing nation. If we put even 1 hour, one student, if we put behind the bus, his life will be completely finished. Because downtrodden scenario. So this is the social issue. So that is what. Otherwise, what is happening again? The students and others, they're taking it as an advantage. Okay, they send without DL, they are riding. The another people, each and everyone, they are motivating. Not like that. Once they involve in any kind of crash, his life will be completely finished. थैंक यू वेरी मच सर. मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो इन्फोर्समेंट है, नॉर्थ और साउथ की बात नहीं है, ये इन्फोर्समेंट कितना विजिबल है उस पर भी बहुत ज़्यादा रोड यूज़र बिहेवियर डिपेंड करता है. मैं अहमदाबाद होकर आया अभी सर की कॉन्फ्रेंस में लास्ट वीक,
वहाँ कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था, कोई हेलमेट नहीं पहन रहा था। उसके लास्ट वीक मैं पटना में था। जनरली मैं बिहार से हूँ तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई देख करके कि पटना में हेलमेट का यूज़ कंपलसरी था और मैक्सिमम लोग, इवन जो पिलियन राइडर्स थे वो भी हेलमेट यूज़ कर रहे थे। तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है रोड यूजर बिहेवियर, नॉर्थ हो या साउथ हो, आपका इन्फोर्समेंट, पुलिस का इन्फोर्समेंट कितना विजिबल है वो इम्पैक्ट करता है उस पर। सो थैंक यू वेरी मच सर। मैं नाउ रिक्वेस्ट श्री संजय आनंद लाटकर सर, IPS ADG ऑपरेशन झारखंड, टू प्लीज प्रेजेंट ए गिफ्ट ऑफ टोकन टू वासु सर, प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बाईं ओर की गेट से आप मतलब आपकी दाहिनी ओर, मेरी बाईं ओर, इसके साथ जस्ट सामने लॉन में आपके लिए हाई टी है। आप सब हाई टी का आनंद लें और 15 मिनट बाद फिर वापस यहीं हम एकत्रित होंगे अगले सेशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच। తీసుకున్నారు ఓకే మేడం CPT? Huh? फोल्डर में डेस्कटॉप पे कर दिया। डेस्कटॉप पे कर हेलो Yeah, I'll copy the fonts and my presentation. Okay, sir. No? Put this. Control panel. हाँ, control panel नहीं आ रहा इसमें। File Explorer,
device manager. Without fonts, it won't run. Sure. Without fonts, oh, sorry, it is still exam. No, no, sir. Actually, ये lights बंद कर दीजिए so that the presentation will be